नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम शंका समाधान में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आपकी द्वारा भेजी गई शंकाओं का हमारे विषय विशेषज्ञ द्वारा समाधान किया जाता है। तो आज के हमारे पहले विषय अंग्रेजी में हमारा विशेषज्ञों का पैनल रहेगा। मैडम अनु ये अंग्रेजी विषय की प्रवक्ता हैं, उनके साथ मंजरी मैडम ये भी अंग्रेजी विषय की प्रवक्ता हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अंग्रेजी विषय का पहला प्रश्न। Good morning, students. The question from class 12th that we have received today is from the poetry part, the first poem of your book, which is My Mother at 66. The poem is written by Kamala Das. She is from Kerala, and in most of her writings you will find that she writes about the human relationships and their complexities. So this poem is also about the relationship of a mother with her daughter and vice versa. The mother-daughter relationship has been expressed by Kamala Das in this poem, My Mother at 66. As the title suggests, it is about a mother who is 66 years old. Now, what is the theme of the poem is that the theme is about the advancement in the age and the fear of separation. ये जो पोएम है ये कमला दास जो कि केरला से हैं उनके द्वारा लिखी गई है। कमला दास की मैक्सिमम जो आप पोइट्री देखेंगे या उनकी जो भी राइटिंग्स आप देखेंगे उसमें वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स और उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में बात करती हैं। तो ये जो पोएम है इसमें भी उन्होंने मदर डॉटर रिलेशनशिप जो है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की है बहुत खूबसूरती से। तो ये जो पोएम है इसमें इसका जो थीम है वो है एक तो एज की एडवांसमेंट मदर की, और जो डॉटर है उसमें जो फीलिंग ऑफ सेपरेशन है उसको उन्होंने एक्सप्रेस किया है। अब जो थीम है इसमें ये बताया जाता है दैट द मदर एंड द डॉटर हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद ईच अदर एंड द डॉटर इज गोइंग विद हर मदर टू द कोचीन एयरपोर्ट। वो कोचीन एयरपोर्ट जा रहे हैं, मदर इज सिटिंग बिसाइड्स हर, और रास्ते में वो नॉस्टैल्जिक फील करती है डॉटर, कुछ सोचती है। वो क्या सोच रही है? व्हेन शी लुक्स एट हर मदर्स फेस शी फाइंड्स दैट ड्यू टू हर एडवांसिंग एज, द एडवांसिंग एज ऑफ द मदर, शी लुक्स पेल, शी लुक्स लाइक अ कॉर्प्स, अ डेड पर्सन, एंड शी इज डोजिंग, शी इज स्लीपिंग विद हर माउथ ओपन। तो उनको देख के उस मतलब जो एडवांसमेंट इन एज है उसके साथ रिलेटेड ये जो साइंस हैं इन्हें देख के कि उसकी मदर जो है वो स्लीपिंग डोजिंग, 3 वर्ड से उन्होंने डिस्क्राइब किया है इस एज एडवांसमेंट को। और अपनी मदर के लिए जो उसकी फर्स्ट टाइम जो फीलिंग्स आ रही हैं वो क्या है? एक तो शी इज डोजिंग यानी स्लीपिंग, शी लुक्स पेल यानी उनका फेस जो है वो पेल फेडेड हो गया है, और एक वो कॉप्स लाइक डेड लाइक जो है वो दिखती हैं क्योंकि वीक हो चुकी है उसकी मदर, शी इज एट द एज ऑफ 66। तो एक फीलिंग ऑफ सेपरेशन जो आती है पोइट में वो इसमें वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हैं। शी इज स्केयर्ड दैट हर मदर इज मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ हर लाइफ, विच मीन्स दैट देयर विल बी अ सेपरेशन बिटवीन द मदर एंड द डॉटर फॉर एवर। तो अपना ध्यान जो है उसको डाइवर्ट करने के लिए शी लुक्स आउटसाइड द विंडो ऑफ द कार। जो पोइटस है वो कार की विंडो के बाहर देखती हैं, एंड शी सीज द स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड द मैरी चिल्ड्रन। अब ये एज का बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। मैरी चिल्ड्रन एंड स्प्रिंटिंग ट्रीज, दे आर फुल ऑफ लाइफ। सो अपने आप का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए शी लुक्स आउटसाइड द विंडो एंड शी sees that the trees are sprinting and the children are merrily playing. So this is to divert her mind from the thought that her mother will one day be separated from her when she would be dead. So this has been explained in the later part of the poem. उसके बाद finally they reach the Cochin airport and she is parting from her mother. उनको गुड बाय करने का टाइम आ गया है, शी हैज़ टू गो। सो शी अगेन लुक्स एट हर मदर, और अब जब वो देखती हैं तो फिर से उनके दिमाग में जो मदर की जो इमेज बनती है उसको उन्होंने फिर किसके साथ कंपेयर किया है? विंटर मून के साथ। विंटर मून के साथ इसलिए कंपेयर किया गया है, व्हेन यू लुक एट द विंटर मून तो आप देखेंगे कि विंटर मून जो है वो फेडेड नजर आता है क्योंकि वो मिस्ट या फॉग के पीछे छुप जाता है। तो इसी तरीके से एज
की वजह से उसकी जो मदर है उनका जो रेडियंस है फेस का, उसका जो ग्लो है फेस का, दैट हैज़ बीन हिडन बाय हर एज. तो उनका फेडेड फेस देख के अगेन it reminds her of the winter moon. But she has to move. So she bids goodbye to her mother. अब वो 3 times जो है इस expression को बताया गया है that she smiles, smiles and smiles. तो इस expression को 3 times convey करने का मतलब क्या है? One is a realization that I have less time left to spend with my mother. Then she smiles again because she wants to keep a brave front. अपने आप को एक बहादुर लड़की की तरह वो दिखाना चाह रही है, अपनी फीलिंग्स को, अपनी जो मेलनकली है, सैडनेस है, ग्रीफ है, उसको छुपाना चाह रही है. तो अगेन शी स्माइल्स एंड द थर्ड स्माइल इज फॉर द होप दैट शी विल अगेन मीट हर मदर एंड एवरीथिंग is going to be fine. She will meet her again and she would be alive and she will get time to spend with her mother. So in this here the poem ends that she smiles and bids goodbye to her mother. Now the poem again is about the mother-daughter relationship, which has been beautifully penned down by Kamla Das, and there is a feeling of hope, a realization, and she shows a brave front in the end, with the hope that she would meet her mother again and they will be able to spend good time together. This is all about the poem My Mother at 66. धन्यवाद मैम. अंग्रेजी विषय का यह पहला प्रश्न था. अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर. अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मंजरी मैम को. मंजरी मैम. Good morning everyone. Now in English session, now that exams are approaching and we have started revision everywhere in schools and in your online classes as well. So we are also taking up revision now, and today we will be revising the poem Amanda from class 10. We have started with poetry and we are taking with small portions first so that we can have command over some portion first. So we are going to take the poem Amanda. Amanda is written by poet Robin Klein. She is an Australian poet and has written several children and young adult fiction. Now in this poem Amanda, there are 2 people. First of all, we should know this. One is a young girl, a little girl, and second one, the other person who is talking to her is either her mother or some elder. Most probably she is her mother who is constantly instructing her. तो अब हम देखते हैं कि अमेंडा जो है एक एडोलेसेंट गर्ल है, जस्ट अर्ली एडोलेसेंट एज में वो है अमेंडा लड़की, एंड शी इज कॉन्स्टेंटली बीइंग पॉइंटेड आउट बाय हर मदर टू इम्प्रूव हर सेल्फ, इम्प्रूव हर कोड ऑफ कंडक्ट, हर मैनर्स अकॉर्डिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सोसाइटी. जैसे सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमारे मैनरिज्म्स होने चाहिए, हमें किस तरह से होना चाहिए, उसके बारे में उसको बार बार पॉइंट आउट किया जा रहा है उसकी मदर के द्वारा. फर्स्ट स्टैंजा में आप देखेंगे डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, उसको बोला जाता है नॉट टू. आप देखेंगे अक्सर एडोलेसेंट बच्चों में हैबिट होती है नेल्स बाइट करने की, विच इज अगेन you know symbol of that they are quite conscious of themselves and not confident enough. तो उसकी her mother is pointing her out again and again, don't bite your nails, don't hunch your shoulders, drooping your shoulders. Young girls who just enter into adolescence, out of shame of their body, they feel this body shame and they tend to hunch their shoulders. So her mother is pointing out to keep her shoulders, keep her body straight. Stop slouching. Again, she's being pointed out for being for slouching. Slouching is sitting with your back bent forward. So again, she's pointed out. But when her mother is instructing her to do all these things, what is Amanda doing? Now, in the second stanza, it is given in parentheses. And why? What do we write in parentheses? Brackets. Some extra information, some extra explanation about the sentence against which the parenthesis is written. So in parentheses here, the thought process of Amanda is given. How she is thinking, whatever she is thinking,
All that is given in parenthesis. So in the first stanza, when her mother is pointing out about her body posture and all, how she's sitting, how whatever she's doing, she wants to be a mermaid. A mermaid is like half fish, half human. They are imaginary creatures and they are supposed to be living in sea. Water creatures. Okay. Now, why does she want to be a mermaid? Because she wants to be free. She wants to move freely, relaxed, alone, calm, peaceful in the sea waters. She wants to go or be whatever way she wants to be. So that is why she wants to be a mermaid. The precious thing is that she wants to lead her life in her own way. She doesn't want to be instructed, and that is also, as we know, the chief characteristics of adolescent age. Adolescent children do not want to be instructed around at all. In the next stanza, what do we see? She is again reprimanded by her mother for not doing her homework, for not keeping her room clean, not keeping her shoes clean and properly. Her mother is asking, have you cleaned your room? Have you cleaned your shoes? Done your homework? Again, she doesn't want to be watched all the time, to be someone sitting on your head and asking you to do this and that all the time. She doesn't want all this. So in her imagination, again, what she is thinking is that she wants to be an orphan now, without parents. And if there are no parents, who is going to scold her? Who's going to ask her to do this, to do that? Nobody. She can all day move around as she pleases, and again she can pass her time by making formations or designs on sand, on beach. Nobody is there to point her out regarding this. So that is why she wants to be a orphan. Another thing which is written here is, she says, silence is golden and freedom is sweet. The crux of the poem is this. She doesn't want anybody instructing her. She wants silence. Nobody should tell her what to do. And freedom is sweet. Who doesn't love freedom? Even she wants to do things in her own way and she wants to behave. But as parents, they are instructing her the codes of society. In the next stanza, her mother disallows her to eat chocolates. Chocolate is sweet, and in adolescent age we also have some physical changes, hormonal changes, due to which some people, some students, some children have pimples on their face, and you know, chocolate just doubles that thing. So her mother says, do not eat chocolate because you will have pimples on your face. To which, where does now little Amanda's mind go? She wants to be now a Rapunzel. She wants to be away from the parents, the society, all the controlling part of society. She wants to be away from that. Now who was Rapunzel? Rapunzel was a little girl, a fairy tale character, whose stepmother, who was supposed to be some kind of witch, she locks her up in a very high tower and there are no stairs to reach her. Now how does that witch reaches Rapunzel? It is through her long golden locks hair, which she lets down and she climbs those hair and reaches. Now Amanda also wants to be in place of Rapunzel, but she says, I will never let my hair down, because she doesn't want anybody to come to her, to instruct her, to tell her to do this, to do that. No, she doesn't want that. What she wants is that she should live alone, peaceful and in her own way. So she doesn't want to let her bright hair down at all. In the last stanza, her mother again asks her not to be very moody. If she is moody, if she reacts emotionally to her mother's instructions and commands, then others would say that her mother is controlling her, all the time scolding her, which she doesn't want. Mother doesn't want anybody telling her that you are scolding your daughter. Again, so now
we don't have any response to this stanza. Now even Amanda has stopped even imagining. She says, I have no control over my life. I have no way of doing things in my way. Everything is instructed by my parents, my mother or some elder. So now even I cannot show my moods. So that is why Amanda, the poet has not given any further response to this stanza. So this was the explanation of the poem, and the main central idea, the theme of the poem here, which we get to know, is that in adolescent age, young children, they want to be free. They want some kind of freedom for themselves to move, to behave around, but they are not given that kind of freedom, and they feel that they are trapped, they are captured, because they are all the time instructed by their parents to do this or to do that, which they do not want. So we also know very well that adolescent age is a very, very strange time period in the life of a child. He doesn't know what is right or wrong. He just starts learning things. So he thinks he knows better, but parents try to instruct them. Here parents are also not wrong, because they are trying to tell the kids the right behavior, the right code of conduct. But this is how the adolescent age is. I hope the poem is clear to you, and you will be able to manage the question answers of this poem. To learn the poem thoroughly is you should read the poem again and again, and then go through the explanation of the poem. I think this poem is not that difficult. You will be able to do it. Thank you so much. Next time we'll take up another chapter and revise it. Thank you. धन्यवाद मैम, काफ़ी अच्छे से आपने इसका समाधान किया है और निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों की शंका का समाधान हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले विषय की ओर। अगला विषय हमारा गणित विषय। गणित विषय के हमारे आज के पैनल में हैं रजनी मल्होत्रा मैडम, जो कि गणित विषय की प्राध्यापिका हैं। इनके साथ रजनी गोयल मैडम, ये भी गणित विषय की प्राध्यापिका हैं। साथ ही राजेश कुमार जी, ये गणित विषय के अध्यापक हैं, और इनके साथ रमेश लाल टाया जी, ये भी गणित विषय के अध्यापक हैं। तो हमारा गणित विषय का आज का पहला प्रश्न है। मेरा नाम तानिया है। मैं सेक्टर 15 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ, क्लास 10th A। मेरे को मैथ के सिलेबस में एक प्रॉब्लम आ रही है, चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलनाकार का है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है तथा उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर दिया है। Myself Rajni Goyal, lecturer maths, working at Government Senior Secondary School Sector 6। शंका समाधान में 10th क्लास के बच्चे का 13 चैप्टर में से एक क्वेश्चन है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है। 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है और उसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है और उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। ये एक गुलाब जामुन का आकार दिया हुआ है, ये दो अर्धगोले हैं इधर, और ये इसका व्यास कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये लंबाई कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर और व्यास दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। अब सिर्फ उसको छोड़ दे, अगर हम अर्धगोलों को छोड़ दे, बेलन का हम आयतन निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर हम अर्धगोलों का आयतन निकालेंगे। गुलाब जामुन के सॉल्यूशन है, गुलाब जामुन के बेलनाकार भाग का व्यास कितना दिया हुआ है, मान लो R1 ले लेते हैं 2.8, त्रिज्या ले लेंगे R1 हम, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर।
ये इसकी त्रिज्या है इतनी, ये पूरा इसका व्यास है, ये त्रिज्या है इसकी, ये कितनी है त्रिज्या 1.4। अब बेलनाकार भाग की लंबाई या ऊंचाई कैसे निकाल लेंगे? 1.4 इधर से ये माइनस हो जाएगा, 1.4 इधर से ये माइनस हो जाएगा, यानी कि टोटल 2.8 माइनस हो जाएगा। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 5 में से ये इसका 2.8 माइनस कर देंगे, दैट इज 2.52 सेंटीमीटर। अब बेलनाकार भाग का आयतन निकाल लेंगे। आयतन का फॉर्मूला होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज पाई r1 स्क्वायर एच। बाई बटा में 7, आर कितना है इसका 1.4, h1 हमने इसको h1 से डिनोट किया है, तो ये आ जाएगा 2.2। अब जो बचे हैं हमारे अर्धगोले, 2 अर्धगोलों का आयतन, दो है हमारे पास, तो 2 से गुना कर देंगे। अर्धगोले का 2/3 पाई r क्यूब, r2 मान लेते हैं इसको, क्योंकि पहले हमने r1 लिया था, r2 क्यूब, दैट इज 4/3 पाई की वैल्यू बाई बटा में 7। r हमारा कितना है त्रिज्या 1.4, इसकी भी त्रिज्या कितनी है हमारी 1.4। और अब हम निकालेंगे पूरे गुलाब जामुन का आयतन। ये बेलनाकार भाग है, ये दोनों अर्धगोले हैं, तो उसका हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेते हैं। बेलनाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोलों का आयतन, प्लस अब इसमें से अगर हम कॉमन निकाल लें तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी हमारी। तो बाई बटा में 7 कॉमन निकाल हो जाएगा हमारा, और 1/4 का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 2.2, यहाँ से हमने ये कॉमन ले लिया, ये है 1.4, 1.4 गुना में 1.4 हो जाएगा, ये 5.6 डिवाइडेड बाय 3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0.28 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे, ये 2.2 था, ये हो गया हमारा डिवाइडेड बाय 3। अब हमने ये लिया था, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ आएगा 6, इसको भी यहाँ एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6.6 आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर। ये आ जाएगा 22 इंटू, ये हो जाएगा 3.416 डिवाइडेड बाय 3। इसको 22 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 अक्षर बाद यहाँ पे डेसिमल आएगा इसका 75.152 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा 25.05 अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे हम 25.05। अब ये आया हमारे एक गुलाब जामुन का आयतन। अब हम निकालेंगे हमारे गुलाब जामुन कितने हैं 45
गुलाब जामुनों का आयतन। एक का है हमारा इतना 25.05, अब 45 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ट्वेंटी 25.05 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी